Your life now. So we met on Saturday. उस दिन 12th का करना था तो 13th 14th 13th 14th 15th कितने दिन हो गए उस दिन से? शनिवार रविवार मंगलवार तो आज तुम्हारा 15th या 16th चल रहा होना चाहिए था। 15th एटलीस्ट कवर हो जाना चाहिए था। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। सो by now you are very close to finishing the geography। लगभग खत्म होने वाला होगा मोस्ट ऑफ द लोगों का। All of you are comfortable in Hindi, no? If anybody is not able to understand you in me. So, hmm, Ritika has a very funny question that why extratropical cyclones cover extra area? What extra area, Ritika? What do you mean by extra area? Hmm? More than tropical cyclones. Why they're called extra क्यों बोलते हैं उनको? Extra tropical? Why extra tropical cyclones are called extra tropical cyclone? Anyone? More than tropical cyclones. What is more than tropical cyclones? ये वो 23 का अटेम्प्ट देना है तो साथ साथ स्टैंडर्ड बुक्स खत्म कर लेना होगा। एक वीडियो जो एनसीईआरटी तो ठीक है लेकिन साथ साथ और भी सारी चीजें कवर होनी चाहिए। ऑप्शनल है, करंट अफेयर्स है। स्टैंडर्ड बुक्स है, सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं होगा। None of the subjects are completed yet, Rohan. We are doing geography. After geography, we will start history. What about polity? What about polity? I could not understand your question. Why tropical cyclones or extratropical cyclones are called extratropical?
हम्म। कहाँ गई रिंकी? Why extratropical cyclones are called extratropical? Ritika, you are studying law ना? लॉ पढ़ रही हो ना? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? इफ आई से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डज दिस मीन? रिंकी बताओ। Sir, basically, extratropical cyclones have cold air at their core and derive their energy basically from the release of potential energy. And when cold and warm air masses interact, that's why it's called an मेरा extratropical cyclone. क्वेश्चन वो नहीं कि वो कैसे बनता है, क्यों बनता है। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है कि व्हाई दे आर कॉल्ड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। So, sir, these storms basically connected one or more fronts, and अरे तो उसको ऐसा फ्रंट, उसके लिए तो उसको फ्रंटल साइक्लोन कहते हैं। एक्स्ट्रा mm, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों कहते हैं? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? नहीं लेने, वो यू आर रॉन्ग, दैट्स द सेम मिस्टेक दैट Ritika is doing. Yes, Rohan. Oh, Jana, you were so close, but you made such a silly mistake. Very close. You made a very silly mistake. sir, will it be the beyond of the provisions of the Constitution? Yes, when we talk about, देखो जब हम कुछ कहते हैं एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा डजंट मीन मोर। Give me some. You go to a shop and the shopkeeper gives you 5 items and you ask, give me something extra. That doesn't mean give me something more. Extra can be anything. When we talk about extra, पहले अंग्रेजी समझो थोड़ा। एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है? जब हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, दैट मीन्स कि समथिंग विच इज नॉट written in constitution that becomes extra constitutional. So when I'm saying extra tropical, that means कि something which is happening beyond tropics. It doesn't mean कि what is the size, what is the length, what is the breadth. It does, the term extra does not depends upon कि इट्स बिगर, इसलिए उसको एक्स्ट्रा नहीं बोलते हैं, उसको एक्स्ट्रा बोलते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल डजंट मीन कि बिगर देन ट्रॉपिकल। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मीन्स बियॉन्ड ट्रॉपिक्स। ठीक है। नाउ व्हाई साइज इज बिगर, दैट if you understand the whole phenomena of the formation of extratropical cyclones, you will understand, because extratropical cyclones cannot be built on smaller scale. It needs large homogeneous air। पढ़ा है ना हमने, फ्रंट कब बनेगा? फ्रंट बनने के लिए बहुत लार्ज एरिया में, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में होमोजीनियस लेयर होना चाहिए, वर्टिकल होमोजीनियस, हॉरिजेंटली होमोजीनियस। तभी जाके फ्रंट बनेगा और तभी जाके फ्रंट का फॉर्मेशन होगा और तभी फिर एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे और फिर वाटर, वो रेनफॉल होगा।
ठीक है. When low pressure area get pressure from high pressure area, high pressure from high pressure cyclone nearby. नहीं लेने वो. ये तो नाम ठीक से. You all of change your names. You go and like there are options to change your name. Lenovo और Vivo. वो तो बोलो कैसा खराब लगता है पढ़ाने में. Lenovo, Vivo, iPhone. You have good names. So नाम रख लो. तो तुम्हें अच्छा लगता है मैं बोलता हूँ लेनोवो टैब 4 बताओ क्या होता है आंसर. मुझे तो अच्छा नहीं लगता. कहीं तुम्हें पद्मश्री अवार्ड मिलने जाए और बोला जाए कि आइए लेनोवो टैब कम एंड गेट योर पद्मश्री अवार्ड. पीडीएफ में भी यूपीएससी के ही आ जाए कि वीवो गॉट रैंक 3. नाम रख लो. इट हेल्प्स मी ऑल्सो. फ्यूचर में तुम बोलो भी कि सर मैं वो बोल रहा हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन बोल रहा है. तो सर मैं भी वो बोल रहा हूँ. रोहन सिंह. राकेश कुमार दास. when low pressure area get when low pressure. So what you are trying to explain first, like तुम आंसर किस चीज का देना चाहते हो वो क्लियर नहीं. Call me after class, Rohan, as we end this meeting. So anything else, any other doubt you have? टॉपिक और एक्स्ट्रा टॉपिक क्लियर हो गया ना. हाँ रिंकी बताओ. अरे तुम्हारे पास मेरा कांटेक्ट नंबर भी नहीं है. सर वो कंसेप्ट ऑफ 4 डिग्री वाटर वाला था और एक उसी पेज में वो जो आप बता रहे थे ना, कैलकुलेशन 22 डिग्री सेल्सियस एट लैटिट्यूड, 14 डिग्री सेल्सियस एट 40 डिग्री लैटिट्यूड, वो वाला थोड़ा सा अच्छे से समझ में नहीं आया. हम्म. उसके लिए तुम्हें अच्छा मेरा नंबर लिख लो जिनके पास मेरा नंबर नहीं है. दिस इज माय ओनली नंबर. आई डू नॉट हैव एनी अदर नंबर. सो इफ यू आर टॉकिंग टू एनीवन एल्स ऑन एनी अदर नंबर दैट्स नॉट माय नंबर. देयर इज नो अदर ब्रांचेस. 8368481844. All other numbers are numbers of staffs people working with me. This is my only number. So about 4 degree. We need to understand a lot of science to understand this very simple idea. So let's have a test of how much science you guys still remember. Basic science, like not difficult science. So the first question is the formula of density. Density का formula कोई बताएगा? Density is equal to mass divided by volume. Mass by volume. ठीक है. So which will have higher density? 1 kg of iron or 1 kg of cotton. हायर डेंसिटी किसका होगा? आयरन. ठीक है. Why iron will have higher density? और अरे भाई तुम आज
लो रेजिस्टेंस, ये कहाँ चल रहा है? हायर वॉल्यूम, विच हैज हायर वॉल्यूम, आयरन और कॉटन? लो रेजिस्ट बाई एयर, नहीं नहीं नहीं, कॉटन हैज हायर वॉल्यूम। देखो, तुम सबने देखा है 1 केजी का, अगर तुम्हें 1 किलो का वेट तुमने देखा होगा ना, आयरन वेट, इट्स स्मॉल इन साइज। बट इफ यू टेक 1 kg, if your mother or anybody in your house have ever made a sweater for you, you go and try to buy 1 kg of wool, it will fill a big bag of wools. So the mass, पहले तो you need to also differentiate between mass and weight. सबको पता है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? सुचिता, मास और वेट में अंतर? मास इज mg, नहीं नहीं, वेट इज mg, मास इज नॉट mg। देखो, weight of anything or mass of anything will be decided by the number of particles that it has। तो अगर तुम आयरन के पार्टिकल्स को देखो तो दे आर वेरी क्लोजली बाउंड, हाँ, बहुत वो पास पास में है, बहुत डेंस है, इसीलिए टर्म है डेंसिटी। डेंस फॉरेस्ट, बहुत घना जंगल है, इट्स अ डेंस फॉरेस्ट। So if something is dense, that means its particles inside it are at very close distance. There is no space between. If you will take a microscope and look at them, so they will be very closely held to each other. On the other hand, atoms or molecules of cotton will be very loosely packed. So इसकी density कम है, ठीक है। ये सबसे फंडामेंटल रीजन है डेंसिटी को समझने का, कि हाउ द पार्टिकल्स आर पैक्ड। इफ पार्टिकल्स आर पैक्ड वेरी क्लोजली, इट विल हैव हाई डेंसिटी। इफ पार्टिकल्स आर पैक्ड लूजली, इट हैज लो डेंसिटी। अब हमने पढ़ा है, आई हैव टोल्ड यू, इफ यू विल स्टार्ट हीटिंग समथिंग, इट्स पार्टिकल विल, if you will start heating something, what will happen to the particles? It will start expanding, ठीक है ना, ये दूर एक दूसरे से ऐसे दूर जाना शुरू हो जाएंगे। So if you will heat anything, it will expand. But water is a very unique material. I have shared a video on my Instagram ID. I don't know how many of you follow me on my Instagram, but if you'll go to my Instagram, EK Singh sir, I recently, like, I think the last video that you will find is about water. A very fascinating video. You will be shocked and surprised. Anybody watched that video? किसी ने देखा वाटर वाला जो वीडियो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था? नहीं देखा? देखो जाकर, इट्स वेरी फैसिनेटिंग, योर होल कॉन्सेप्ट अबाउट SINGH सिंह सर। नहीं, अबाउट ओशन नहीं, अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले मैंने शेयर किया अबाउट वाटर। 2-3 मिनट का BBC का एक क्लिपिंग होगा।
So as you heat something, it starts to expand. तो अगर तुम किसी भी चीज को लेट सपोज आई एम टेकिंग टू थिंग्स, आई एम टेकिंग आयरन, 1 kg iron, same weight is same, 1 kg iron at normal room temperature 24 degrees Celsius, and I take the same 1 kg iron at 10,000 degrees Celsius. What will be, which will have higher density? किसका डेंसिटी ज्यादा होगा, 24 डिग्री सेल्सियस वाले का या 1000 डिग्री सेल्सियस वाले का? या सेम रहेगा? रित का 1000 से स्टार्ट की, लेकिन फिर धीरे धीरे यही दिक्कत है। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ ज्योग्राफी के साथ दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। दोज हु आई वुड हैव प्रोबब्ली टोल्ड यू दिस सेवरल टाइम्स इन द क्लास एज वेल कि इफ यू डू नॉट नो साइंस, ज्योग्राफी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ड्यूरिंग माय लेक्चर्स टू एक्सप्लेन दीज subtle things. So density of this will be high, density of this will be low because its volumes, its molecules will be further apart. The same molecules will now be taking more space, relatively more space, although there will not be big difference, लेकिन थोड़ा वो expand हो जाएगा। बाकी चीजें सेम है, mass is same, but volume will increase, and when volume will increase, density will decrease. वैसे ही let's take water. Let's take water. Let's take water. So if we think about water, water at 20 degrees Celsius room temperature and water at 100 degrees Celsius, which will have higher density? So 20 degree will have higher density because particles are compact here. Now, if we compare 0 degree and 20 degree, which will have higher density? Here it gets a little tricky. It doesn't happen with any other substance, anything else, but it happens only with water. Water has this unique phenomena, unique property, and you will understand this only when you will watch that video on Instagram. Water के साथ क्या होता है? When you start cooling the water, and when the water reaches 4 degrees Celsius, at 4 degrees Celsius, its molecules will be most compact. जितना ज्यादा कंप्रेस हो सकता है ना, वो सबसे ज्यादा कंप्रेस फॉर्म में ये 4 डिग्री सेल्सियस पे आता है, मोस्ट कॉम्पैक्ट। सो वाटर का डेंसिटी जो होगा वो सबसे ज्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। इवन इफ यू विल गो above 4 डिग्री सेल्सियस, because of the heating, it will start separating. The density will start decreasing. And if you will go below this, also density will start increasing. Or sorry, density will start decreasing. तुम ऊपर भी जाओगे 4 डिग्री से तो डेंसिटी कम होगा, नीचे भी जाओगे तो डेंसिटी कम होगा। All of you can see this by doing a simple experiment. Don't try it at home. तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा,
if you will fill a bottle of water, do this. अभी ये सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट करना, क्या करना, एक पानी का बोतल लो और उसको पूरा फिल कर दो, बट डू नॉट जस्ट फिल द लास्ट टिप ऑफ इट, थोड़ा सा लीव लीव द वाटर at the top some space and freeze it, and you will find कि the ice will not be up to the level where you have filled the water but slightly higher than that level. That means कि water expands at its get cooler. क्या होता है, वाटर का वॉल्यूम जो है वो ठंडे होने पे, बर्फ जमने पे वो कम नहीं होता है, वो और बढ़ जाता है. Why it happens? Again, you will understand when you will watch this. Actually, nobody knows. So, this is unique property of water. And that's why what happens in ocean or big lakes, when temperature starts to decline, when it reaches 4 degrees Celsius, water becomes heaviest, most dense. तो क्या होता है, we have read कि dense things settle down on the bottom. जो भारी चीजें होंगी वो डूब जाएंगी. तो dense water goes at the bottom of the ocean. And because the ice is lighter than the water, it will remain on the top. So the top वाला जो region होगा ये ice हो जाएगा. But the heaviest water will remain at the bottom, which is at 4 degrees Celsius. ठीक है. For that, you should watch the video on my Instagram. Santosh. And let me know in the comments कि सर मैंने देख लिया है. बहुत टाइम वेस्ट करते हो लोग तुम लोग इंस्टाग्राम. Watch something meaningful. ठीक है. Anything else? So how many videos are left now? अरे I already told my Instagram ID. तुम कहाँ सोए रहते हो? My Instagram ID is KK Singh sir. I have already written it here. फिर से अच्छे से लिख देता हूँ. KK Singh sir. So 3 videos are left. न्यूज़पेपर क्या, अंजलि क्या करना है न्यूज़पेपर का बताओ. न्यूज़पेपर आज taught in पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप. हम यहाँ न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं. अभी मैंने खत्म किया है न्यूज़पेपर का क्लास. और some of you might also be in that group. So those who want to cover their current affairs as well with the standard books, you should join personal mentorship batch. ठीक है. What about human geography? We will cover that. Whatever is important in the human geography, we will cover that, Harjot. Don't worry. करेंगे सारा कवर. और क्या बताना था? So 3 more videos are left. So किस दिन मिला जाए? So let's meet on Friday then, on 19th, and come up with all your doubts on this geography. And in between, if you're watching the videos and if you're finding it helpful, then let me know कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है तो भी बताओ कि सर आपने बहुत खराब पढ़ाया है, नहीं समझ में आया है, फिर से पढ़ाओ. So probably I will take the live classes if you're not able to understand. ठीक है. So howsoever, whatever it is,
just let me know. I'm always open to appreciation and criticisms. तो बट पढ़ोगे तभी होगा. One test based upon topics. Harjot, do the PYQs now. PYQ करो क्योंकि NCERT से ना अभी you will not be able to solve many questions. Okay, I will send a question. I have some questions. I will send some questions. ठीक है, जो मैं क्लासेस में questions करवाता हूँ, I will send those questions into the group. ठीक है. By anyone, whichever is available to you. Geography is not a subject which is changing every day. So, the gray one is new one. I have the yellow one. So when I will start teaching, I will be starting GC Leong from September. So in my classes, I will be teaching with the yellow one. ठीक है, चलो, let's end it. We'll meet again on Friday, and by then I expect you all to finish all the videos. And if anybody has any question, any problem, I'm always available. Whatever doubts you have, don't feel shy. And मैं हमेशा हूँ बताने के लिए. ठीक है. No question is silly. थोड़ा सा सोच के पूछ. चलो, ठीक है. Bye everyone.